चलो अभी नहीं कर। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सेल्स अबंडेंस कोड, अ पॉडकास्ट डिजाइन टू हेल्प यू through your sales struggle and take charge of your income and life. तो ये पॉडकास्ट दोस्तों उन लोगों के लिए जो अपने ड्रीम्स के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं बट समहाउ उनका बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा है, समहाउ उनका रेवेन्यू नहीं आ रहा है, समहाउ उनका प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, एंड ड्यू टू दैट दे कम अंडर द नोशन कि यार सेल्स है ना मेरी चीज नहीं है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, राइट? एंड दे गेट इनटू द रॉन्ग नोशंस अबाउट द सेल्स, एंड उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जिनको एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल बिजनेस ग्रोथ चाहिए, want to really crush the business game of business, want to really crush the game of profits, and this is the podcast for you guys. So let me first introduce myself. My name is Omkar, your digital system architect for trainers and coaches in India. और मेरे साथ है ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति जो कि एक एक्सपर्ट है, जिन्होंने इंडिया के तमाम बिजनेस प्रोफेशनल सीईओ की लाइफ बदल डाली है, जिन्होंने अपने बिजनेस ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स से बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। सो वेल हेल्प मी वेलकम मिस्टर अमित सराफ, हु इज अ बिजनेस सर्टिफाइड बिजनेस कोच। तो अमित, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा लग रहा Oh, thanक यू सो मच. Thank you so much, Omkar, for this lovely introduction. I'm super excited because I know आज का ये पॉडकास्ट बहुत इम्पैक्टफुल होने वाला है. एंड खास करके अगर मैं बात करूं हमारे सेल्स और बिजनेस के उस डोमेन का, ये जो अभी आपने कहा ना कि सेल्स इज दैट क्रूशियल एलिमेंट विच कैन स्काई रॉकेट बिजनेस. तो आई थिंक इसमें क्लैरिटी आना, प्रेडिक्टेबल एक सिस्टम होना, ये इस सब चीजों को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आज का ये पॉडकास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं. सो ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, ऑल द बिजनेस ओनर्स, गेट रेडी. द वॉट एवर यूनिक पावर यू हैव, वी आर गोइंग टू अनलॉक टुडे, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस. है? वाह, अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी अमित। सो आई रिमेम्बर हम दोनों जब इस पॉडकास्ट के बारे में, ये क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे, वी हैड अ सिंपल विजन कि भाई ये जो सेल्स प्रोफेशनल्स है, जो भी बिजनेस ओनर्स है, जो भी नए नए चालू कर रहे हैं, या फिर एनी सीईओ, एनी लीडर, वी वांट टू हेल्प देम टू टेक देयर गेम ऑफ बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, गेम ऑफ लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। और तभी हमने ये सोचा कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ एक पॉडकास्ट चालू करते हैं, which will be a no fluff, no BS. It will be simply those tactics, those forward strategies जो दुनिया के टॉप मोस्ट बिजनेस हैकर्स, बिजनेस ग्रोथ हैकर्स यूज करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, हमने जिन जिन लोगों से बात की है ना, जितने भी एक्सपीरियंस बिजनेस होगा, उन लोगों से हमने एक चीज बहुत बहुत जाने कि भाई सेल्स इज अ रैंडम थिंग। most of the business why they do not grow is because they think the sales is not important, is they think like sales है ना एक luck by chance का, it's an element of luck by chance, right? तो इसी साइकिल को ब्रेक करने, इसी थॉट प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए ये वैल्यू ड्रिवन पॉडकास्ट हमने शुरू किया है। So let us start, Amit, with this very first episode of the podcast, which is how to set up your sales engine like a pro. So बताओ अमित, आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, और या योर थॉट्स? Absolutely, Omkar. So, and if you ask me about the sales engine, basically before I talk about sales, I feel when somebody works on sales, somebody wants to elevate their sales, make business, it's just not about the professional goals they achieve. It's more than that. It's the personal dreams. जब एक सेल्स अच्छा होता है ना, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हो, आपकी टीम इज मोर हैप्पी, योर लाइक योर ग्रोथ इज देयर टुगेदर, they trust you more. You are just not making your business skyrocket, but you're actually helping the other people who are also dependent on the business. So it is just not a sales. अगर मैं इसको बताऊं ना, it's actually a lifeline of a business, empowerment of someone to take everybody together to the next level. So like this say, that's why it's called as a sales engine. And every engine has got something which has got like clients and revenue. like कैसे consistently हम clients लेके आ सकते हैं,
कैसे Mhm. हम रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली बना सकते हैं, ये है एक सेल्स इंजन विच विल बी टॉकिंग अबाउट। एंड विदाउट सेल्स इंजन आप कितना भी मेहनत कर लो, राइट, what happens if there is no process, there is no sales engine setup, always you will have unpredictable results, always you will be disappointed। किसी महीने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए, किसी महीने कोई रिजल्ट नहीं है, एंड बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर सोच रहे हैं कि यार ये महीने हम क्या करें, क्योंकि खर्चे तो उतने ही है। Right. इट्स जस्ट अबाउट Right. Yeah. कंसिस्टेंट स्किल्स व्हिच हैज टू बी मेड। सो आई थिंक Mhm. दिस इज ऑल अबाउट सेल्स इंजन वी विल बी टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बहुत लोगों को देखा है कि है ना, वो फॉलो तो करते हैं, दे फॉलो सम ऑफ द अदर सेल्स प्रोसेस, बट समवेयर उनकी सेल्स में प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट एबल टू एनालाइज द सेल्स, और उससे चलते even though they are making good money this week, they are not able to predict what is going to be happening in the next week. तो उससे क्या होता है भाई साहब, पूरी पर्सनल लाइफ की वाट। And I have seen so many young talented people going the same lane. तो उससे क्या होता है ना, रिजल्ट नहीं होते। The main reason, the main thing that will affect if they do not focus on this system, creating this system, is उनका रिजल्ट नहीं आने वाले कुछ भी कर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम उसी के बारे में बात करने वाले। हम बेसिकली इस टॉपिक को लेके हम तीन चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहली चीज तो ये, हम जानेंगे अमित से कि व्हाट इज द सेल्स इंजन ऑल अबाउट, ये क्यों जरूरी होता है। देन वी विल गो एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द थ्री बेसिक एलिमेंट्स बाय व्हिच you can actually start building up setting up your sales system of your own, which can run for you automatically, and at the end वो एक्शनेबल स्टेप आपको मिलेंगे जो अभी से, इसी वक्त से, आफ्टर यू लिसनिंग द पॉडकास्ट, यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, एंड यू विल सी कि आपकी जो जर्नी है ना, यू वोंट इवन नोटिस कि वो चालू भी हो चुकी है, टू बिकम लेजेंडरी बिजनेस टाइकून, राइट। सो अमित, आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो अहेड। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि भाई साहब, ये सेल्स होती क्या है और हम लोग इसको क्यों बनाए। ओके, ओके। सो अगर आप मुझे सेल्स इंजन की डेफिनेशन बोलो ना, तो मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूं, सेल्स इंजन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, राइट। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कंसिस्टेंटली आपको रिजल्ट्स आता रहे, राइट। एंड हम्म। अंकर, आई वुड वांट जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है अलोंग विथ यू, यू नो, जस्ट डू लाइक हम्म। दिस। ओके। इमेजिन दिस इज आवर बिजनेस, राइट। ओके। एंड इस बिजनेस हाँ। में क्या है, हमारा एक सेल्स प्रोसेस है। इमेजिन दिस इज अ सेल्स इंजन, राइट। अब हम्म। होता क्या है यहाँ पे, हियर कम्स द इनपुट। मे बी हमने जो टाइम यहाँ ओके। पे डाला, हम जो भी टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने जो भी मार्केटिंग डाला, हमारे पास जो भी लीड्स आए, दिस आर ऑल इनपुट, दे आर कमिंग टू आवर सेल्स प्रोसेस, राइट, और ओके। सेल्स इंजन। हाँ। इसमें आने के बाद ये जो बॉक्स है, राइट, इस पे हम क्या करते हैं, उनको हम नर्चर करते हैं। इधर यू कैन डू लाइक दिस एंड ऑल द ऑडियंस वाचिंग दे कैन डू, है ना। हम नर्चरिंग करते हैं उनको, ओके। उनके साथ ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनको हमारे प्रोडक्ट्स बताते हैं। एंड इफ एवरीथिंग गोज गुड, सिंपल वी हैव लास्ट थिंग इज आउटपुट, राइट। आउटपुट में हम्म। क्या होता है, द डील इज क्लोज्ड एंड यू गेट रेवेन्यू, दैट सिंपल। वाह। So simple हाँ। input, there is a process and there is an output. So now what people have made it so complicated कि यार ये वो ये इनका ढकाना कुछ नहीं। Simple it is, you know, like input, how do you take care of input, you process it and you go with the output. And you know, once you have this system, you see, your job is done and you get a lot of good sales and good results in your company. अमित, तो इसका मतलब आई कैन सेफली से इट्स लाइक अ बिजनेस इन अ बॉक्स, जो जहाँ पे आप एक इनपुट डाल रहे हो एक पाइप के जरिए, एंड थ्रू द अदर पाइप यू गेट द आउटपुट। इट्स जस्ट लाइक अ प्रिंटर ना। हम जो भी Absolutely. कमांड प्रिंटर को देते हैं, राइट, जो भी कमांड हम प्रिंटर को देते हैं, वो इंक अंदर क्या करता है हमें पता नहीं है, बट एट द एंड वी गेट अ नाइस प्रिंटेड कॉपी, जो भी हो। बट वी फील लाइक, yes, this is something automated, I don't need to go inside the machine and do everything, right? So friends, if you're listening to this podcast, if you're watching this podcast as a video, type it in the chat box or comment, आपकी सेल्स और आपका बिजनेस, इज इट प्रेडिक्टेबल या फिर लक बाय चांस का मामला है। तो इट इज अ लक बाय चांस का मामला, better stay there, focus on this podcast, and you will get to know
some of the amazing nuggets from the master champion business leader Amit Sara. Okay, Amit. So before I go further, I wanted to understand कि have you ever utilized the system on someone else? उसके पीछे कोई story है? Tell me. I just wanted to understand before we go deep dive into that system. I just wanted to understand ये engine has it worked somewhere and what is it? Oh God, I can, like vouch for this. It has just not worked for few. Like, I have worked with thousands of business owners, and you know what? This is one element which has made actually skyrocket their business. And I'll give you a very classic example, Omkar, by the time audiences are putting in chat box. There was one client, I had a Mhm, discussion with him, and मैंने उसको पूछा कि आप सेल्स करते कैसे हैं? तो मतलब mhm, बड़ा यूनिक आंसर उन्होंने दिया। बोला सर मैं बहुत ज्यादा लाइक मेरे सेल्स का जो पैटर्न है वो इंस्टाग्राम से आता है। मैंने ओके, बोला आप uh-huh, करते क्या इंस्टाग्राम पे? बोले सर मैं डीएम करता हूँ, मतलब डायरेक्ट मैसेज करता हूँ क्लाइंट्स को। एंड mhm, सर किसी किसी सर हफ्ते बहुत अच्छा रहता है सर, कनेक्ट मिल जाता है, तीन चार लोग आ जाते हैं और मेरा धंधा हो जाता है। और सर किसी किसी हफ्ते सर हम डालते रहते हैं सर, कुछ होता नहीं है। तो mhm. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इनकंसिस्टेंट या भगवान भरोसे, क्योंकि Yeah. प्रोसेस Uh-huh. सिस्टम कुछ नहीं है, ये बस तुक्का मार रहे हैं अंधेरे में, अगर लग गया तो बढ़िया है, नहीं लगा तो नहीं हुआ। I had a Right. word with him. I told him, was you need to have a system process. You have to get a sales engine Mhm, which is going to help you. तो हमने mhm, उनके टारगेट मैसेजिंग mhm, हमने बनाया। We made a follow up process. We add कि just not about telling about the product. It's actually value based pitching. उन्होंने उसने हमने ऐड किया, mhm, and you won't believe Omkar, within mhm. just 2 months they had their revenue consistent as well as double with whatever they were doing in Wow. the first month. Wow. Wow. I mean, if I had to say this, मतलब ये ना हर किसी सिस्टम के साथ जैसे स्टेप्स होते हैं, जैसे देर इज सर्टन प्रोसेस इन्वॉल्व, वो खाली दिमाग यूज नहीं न करते हुए जस्ट इम्प्लीमेंट दोस बेसिक प्रोसेस एंड यू विल बी एबल टू सेट अप दैट सिस्टम. So being said that, I wanted to come up to the next point is सपोज हम एक बिल्डिंग में है, राइट? ये सेल्स इंजन एक बिल्डिंग है और हर बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए बहुत स्ट्रांग बेसिक पिलर्स की जरूरत है, एक फाउंडेशन की जरूरत होती है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए. So I wanted to understand, are there any foundations, are there any pillars for this sales system, and just take us through one by one, what are those pillars? Absolutely. So, like when you have talked about, very nice example you have rather given of a building, because किसी Mhm, भी बिल्डिंग में अगर आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 10 फ्लोर्स भी चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन। और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग के साथ ना, अगर हमने इफ वी पुट पिलर्स, दे आर एक्चुअली द लोड टेकर्स, वो लोड लेते हैं और पूरा बिल्डिंग बनता है, राइट? सो आई थिंक mhm, वेरी राइट अप्रोप्रिएट एग्जांपल you gave. So definitely our sales, the engine I talked about, it has got basic 3 pillars. Yes, the one you did. So 3 pillars बहुत important है, which is going to, like, make your sales process very unique, very specific, and it makes a consistent generating machine, right? So the very uh-huh, first pillar, is, and I think this is the most important foundation of any sales. That is, if if the audience is like, just listening, I would say please take a note of this in your notebook, because this, when you work parallelly on this, you actually learn. So that is uh-huh. clarity on your ideal client. मतलब आपका Okay. आइडियल क्लाइंट दिखता कैसा है कौन, राइट? कई Okay. बार क्या होता है ना उनका, यू मस्ट हैव हर्ड, आई डिस्कस्ड विद सो मेनी बिजनेस ओनर्स, मैं पूछा आप बेचते किसको, कौन है आपका क्लाइंट? Mhm, बोलता है mhm. सर किसी को भी बेच सकता हूँ मैं तो। आई वाज लाइक किसी को भी बेच Okay. सकते हो? And Uh-huh. you must have heard this tagline which goes, like, if you are for everyone, you are for no one. Yeah. और हमारा सेल्स भी ऐसा Mhm, ही है, अगर आप सबको बेच रहे हो, देन क्या होगा? यू आर एक्चुअली सेलिंग टू नो वन, एंड यू आर गोइंग टू डेफिनेटली स्ट्रगल। सो अगर मैं अपने uh-huh. टेम्पलेट दूं छोटा सा ना, कि हाउ डज इट Mhm, वर्क, जब आप अपने क्लैरिटी पे बात करते हैं या क्लाइंट, आइडियल क्लाइंट की बात करते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि वो किस एज ग्रुप का है, राइट? mhm, कि उसको पसंद क्या है, उसको नापसंद क्या है, वो किस जगह से है, कौन से लैंग्वेजेस वो बोलता है। सो नाउ यू okay. इमेजिन कस्टमर अवतार जो आपके सामने खड़ा है, वो बंदा है Mhm, कैसा? अगर आपने वो mhm, आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके लाइफ में जो आपके प्रोडक्ट के माध्यम से आप उसको हेल्प करेंगे, वो mhm, क्या प्रॉब्लम से अ, गुजर रहा है, या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही इज फेसिंग।
वो प्रॉब्लम्स को आपको लिखना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम ही इज फेसिंग, और मेरे इस प्रोडक्ट के लाने के बाद से ही विल हैव दिस स्पेसिफिक आउटकम। है ना, होता क्या है ओमकार इससे ना, सपोज किसी ने आपको फोन किया और बोला, एज अ क्लाइंट, ही आस्क्स यू, व्हाट सर, आई वांट दिस सोल्यूशन, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है ना, आप उधर एकदम कॉन्फिडेंट होंगे, ओके यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम राइट, अच्छा ये, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डन द होमवर्क ऑफ नोइंग योर ऑडियंस वेल। अब वो आपको दो राइट। प्रॉब्लम बताएगा, आप उसको और चार बता देंगे, अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बोला हाँ 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 हाँ, सो जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग, द ट्रस्ट इज मोर नाउ, right? And also you know your राइट। audience, and then whatever you pitch, that is getting sold to them, right? So the first pillar is clarity on your ideal client. नाइस। सो सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। सो दोस्तों, हम लोग है ना इस पर्टिकुलर पिलर्स के बारे में हम जब भी बात करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं विच विल ट्राई टू try to make it consistent throughout our discussion. So let's suppose I want to woo a girl on a Tinder, or if you're a if let's imagine if you're a woman, you have seen a boy on a Tinder, or if you're a man, you have seen a girl on a Tinder, और आपका एंड गोल क्या है? भाई मुझे ना मुझे खुद को बेचना है और मुझे मुझे उससे शादी करनी है। तो फर्स्ट पिलर उसका ये है कि क्लैरिटी लेके आओ। बॉस, उस लड़की को क्या चाहिए? चॉकलेट कौन सा पसंद है, कौन सा केक पसंद है, राइट? कौन वो कहाँ पे जाना चाहती है, कहाँ पे चाहती है? मेक श्योर यू नो योर क्लाइंट वेल। इज इट राइट, अमित? एम आई करेक्ट? Oh my God, I think this तो appropriate example, you are you sharing from your life, Omkar? नो, बाय द वे, आई एम मैरिड। Okay. ओके। तो व्हाट आई वांटेड टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि ये सेल्स जो है अपना जो प्रॉफिट होता है, इट इज यू नीड टू बी वेरी इंटीमेट विथ हिम और, राइट? इंटीमेट इन द सेंस कि आपको उसके बारे में बहुत डिटेल्स जानना चाहता है। एंड आई रिमेम्बर अमित, यू वर सेइंग इन सम ऑफ द अदर सेशंस और टॉक दैट know your client more than he knows himself, right? Right. So this is one pillar that is बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी दो पिलर्स के से ऊपर ये पिलर बहुत। तो दोस्तों, just take a moment, if you're watching this video or if you're listening to this podcast, pause the video or this audio, take a moment, write down all the details, जितने भी बारीक जानकारी आप पा सकते हैं आपके टारगेट ऑडियंस को लेके। उनका एज ग्रुप क्या है, वो कौन सा शर्ट पहनते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ पे जाते हैं, उनका क्या स्ट्रगल से, पिन पॉइंट से, सब आप एक नोटपैड में लिख दो। And do share it with us, and we'll love to you know them, and we'll love to help you go deep into it. So Amit, let's go to the next one. Yes, and before that, Omkar, when you have given this time period to audience to write down, right? So I Uh-huh. will give us very small example. Is it okay before we go to the next Yeah, bit? sure, Yeah. sure. Floor is yours. So yeah. So if I give a very good example of a parenting coach, जो आप देखे होंगे कि a coach who is working on parents and kids, so what happens, I have seen many parenting coaches, they are still struggling to actually connect with right audience. अब मैं आपको एक छोटा सा Mm-hmm. एग्जांपल देता हूँ, आई वांट ओमकार यू आल्सो टू help me out when I ask you some few questions. So when we talk about kids, Sure. Yeah. the first category comes like 0 to 6 years, and we call them Mm-hmm. as toddlers, right? Right. So Okay. 0 to 6 years, Uh-huh. there is Mm-hmm. one age group. Then is 7 to 12, Mm-hmm. which is like another, they have now become little Mm-hmm. more younger, and they have started like knowing things, their subconscious brain have got developed. And then comes another teenage, which is like 13, Uh-huh. 14, 15, it has got teen, right? That's why it is teenage, 13 to 18, Uh-huh. right? Or in fact I can say Okay. 19 also. By the way, that teenage definitely is also something that I'm learning, listening from you for the first time. Is it? Sorry for the interruption. Lovely, Please go lovely, ahead. that's fine. So now you see there are three different age groups. Now, Uh-huh. if you look at the problems of parents who are struggling with the 0 to 6 age, will not be the same with 13 to 19, right? Yeah. All right. Now, Right. Right. somebody's sharing the problems of teenagers, but his actual target audience is 0 to 6 years. So, Right. he's Okay. actually confusing the audience.
अरे भाई बोलना क्या चाहते हो, through his content, through his connectivity. And what happens, he keeps on saying, I'm a parenting coach, I'm a parenting coach, so what happens when you are very clear, okay, I'm going to focus on 13 to 19, एंड वहां पे वो बताता है कि मोबाइल के इश्यूज है, एंगर इश्यूज है, ईगो इश्यूज है, पेरेंट्स से रिलेशनशिप इश्यूज है. नाउ द पेरेंट्स विल रेजोनेट, द किड्स विल, दे विल गेट, ओके, ही इज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट माय सन और डॉटर. You see how interesting this is when they have their customer client. Nice, So, interesting. so Yeah, all the audience who are working on this, this is an example I wanted to give. Thanks, Omkar, for allowing for this example. This will help them to understand कैसे बनाना है वो customer, like a particular client avatar that is going to help them. nice. So, दोस्तों, make sure you listen to this. Nuggets, golden nuggets. बहुत ध्यान से सुनना. ये बहुत पावरफुल होने वाला है. अमित, let's go to the next pillar. I'm super excited to learn what is the. Yeah, absolutely. You know what? The next pillar comes with the clarity of first one. Now, I'm assuming you guys have worked and you have got the first pillar done. Now, what happens, you would have seen in many business owners, in many businesses, उनके पास ना लीड्स कई बार आते हैं, राइट? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो इंस्टाग्राम वाले का, वो क्या तो ना, जब महीना शुरू होता है ना, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, हमारे रेंट आते हैं, हमारे स्टाफ के पेमेंट्स आते हैं, वी आर लाइक, हमारे दिमाग में चलता है कि यार इस महीने अगर सेल्स नहीं हुए ना, यार मेरे खर्चे कैसे निकलेंगे. सो उस हाँ, समय पे बंदा प्रेशर में okay. बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ. ही हाँ, टेल्स हिज हाँ, टीम, अरे हाँ, कॉल हाँ. करो, ये करो, वो करो, वो करो, जो कि 30% सेकेंड वीक तक हो चुका होता है, 50% कम हो चुका होता है थर्ड वीक तक, फोर्थ वीक तक तो पता भी नहीं है कि सेल्स कहाँ जा रही है. Right? Okay, So what happens, okay. and the same cycle is repeated again. So the second हाँ, हाँ. pillar is, with this example I want to relate and tell that, the second pillar is all about a consistent outreach. आपको कितने Okay. कस्टमर्स आपको होने से यू रीच द ब्रेक इवन पॉइंट, और यू सेट टारगेट, मुझे 50 कस्टमर्स चाहिए. अगर 50 कस्टमर्स चाहिए, देन एटलीस्ट यू नीड टू रीच आउट टू 200 पीपल. इफ आई टेक 10%, लाइक, और 20-30% कन्वर्शन रेट, मेरे को, आई नीड टू हैव 200 people reached out. So in order to reach out 200 people, I break it evenly in 4 weeks, right? 50, 50, 50, 50. So at least I have a consistent outreach. And बहुत बार ऐसा भी होता है ओमकार, 50 में से ना, when you reached out 50, कुछ 4-5 लोग बोले होंगे कि मान लो मेरा अभी कुछ, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ या मैं किसी काम में बिजी हूँ, मुझे 10 दिन के बाद फोन करना, 5 दिन के बाद फोन करना. सो आउट ऑफ 50, अगर 5 लोग भी अगर इंटरेस्ट दिखाए हैं, होता हाँ, क्या है ना, हम उसके बाद फॉलोअप नहीं करते हैं. हाँ. एंड बिकॉज ऑफ विच, आया हुआ बंदा, कस्टमर जिसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था, जानने की कोशिश की थी, ही इज ऑल्सो. Uh-huh. सो द वेरी सेकंड You know पिलर, what? Uh-huh. Sorry, this sorry. very Please go second ahead. pillar, Please. the very second pillar which we are talking about is the consistent outreach. मतलब आप कंसिस्टेंटली उनको आउटरीच करो अपने ऑडियंस को, लाइक मेक अ टारगेट कि अच्छा मेरे को इतना तो करना ही है. लाइक व्हेन आई से यू एंड योर टीम टुगेदर, एंड वंस यू हैव गॉट द टारगेट एंड आउटरीच बीइंग डन, इंश्योर अ प्रॉपर फॉलो अप, राइट? अगर आप ये कर रहे हैं ना, यू विल सी, यू विल बी एबल टू, लाइक, track them. You will be able to, like, consistently reach out to them. You will be consistent, you will be having a lot of good follow-ups, and good follow-ups will lead to good closings, right? Oh. I mean, let's continue with the same example, Amit. Don't judge me, please. गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मुझे सब कुछ पता चल गया मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में क्या है, अभी डेट पे जा रहा हूँ, ठीक है. ओके. नाउ आई वांट टू, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई मुझे उससे शादी. If मुझे यही पता नहीं कि भाई मैंने उससे क्या बात करनी है. Have I asked her? Have I cared about her? Did I even nurture this relationship? वो नहीं बात बनने वाली, right? And funny thing, you know what I remember when you shared that example about, महीने के शुरू में बहुत एनर्जी होती है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, and then it fizzles out. Is it linking to the same thing that happens to my personal life? जो भी है ना, दिसंबर एंड होने के बाद जब जनवरी चालू होता है ना, भाई बहुत सारे रेजोल्यूशन लेके आता हूँ, ये करना है, वो करना है, वो करना है. ओ माय गॉड, उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं फॉलो अप नहीं ले पाता हूँ मेरे अपने खुद के गोल्स के ऊपर. सब चीजें, And आई मीन, या. and it's just not you, Omkar, like, I'm being the same, everybody, it's not just about, like, business. We are actually the reflection. You are the face of the business. आप जैसे हैं, आपका बिजनेस वैसा ही है.
So I can absolutely resonate, and thank you for being so honest and like speaking this out that many people do it. आप देखो ना जिम के सब्सक्रिप्शंस जनवरी में जिम के हाईएस्ट सब्सक्रिप्शंस हैं, एंड बाय द फेब्रुअरी इट इज 50%, एंड बाय द टाइम इट गोज टू मार्च वो उतने ही आते हैं जो कंसिस्टेंट है, बाकी सब I'm the खत्म। biggest culprit of paying into gyms and not, you know. And so, like, so I just wanted to understand, make the audience understand that there is a hidden line in between what we just spoke about. कि business sales is not a profession alone. It is your part and parcel of your life. जो आप लाइफ में करते हो ना बॉस, वही रिफ्लेक्ट होता है, वही रिफ्लेक्ट होता है Absolutely. बिजनेस, राइट? True, true, true. What a lovely session we are having. So अमित, कंसिस्टेंसी के साथ आप एक्शन ले रहे, दिस इज द सेकंड पिलर. तो दोस्तों, put it in the comment box. What is that consistent action? Maybe one, maybe 10. Put it in the comment box. What is it that consistent action that you're going to take to make sure your business goes fast? हम तीसरे पिलर के पास आते हैं. What is the third pillar? So when I talk about the third and the very important pillar, क्या होता है ओमकार, कई बार ना we have the consistent outreach, we have also thought of making the follow up, but कई बार क्या होता है ना, अरे किसको कॉल किया था मैंने, हम नंबर ढूंढ रहे हैं या हम व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, अरे मैंने भेजा तो था उसको, अरे किसने तो बोला था किसने नहीं बोला था, दैट बिकम्स अ मेस अप। एंड अगर आप अकेले Hmm. सेल्स पर्सन है ना, फिर भी Mhm. टू अट एक्सटेंट ऑल्दो इट इज अ फेलिंग प्रोजेक्ट, बट स्टिल यू कैन मैनेज कुछ हद तक, राइट? बट जस्ट इमेजिन देयर आर 20 people or 10 people or 5 people in an organization who are doing sales, and somebody says सर मेरे Okay. 5 लीड है, सर मेरे 10 लीड है, Mhm. एंड देर इज नथिंग हैपनिंग टू नो कि किसका कहाँ क्या, एक एक कॉमन जगह पे नहीं है, राइट? Mhm. सो Okay. थर्ड पिलर इज ऑल अबाउट keeping a system where you track Okay. all the calls happening, all the sales process happening, and also look at how it is to be improved, राइट? सपोज कई Mhm. बार क्या होता है ना कि हमने एक लीड जनरेशन के लिए हमने एक एडवर्टीजमेंट डाला, अब वो Mhm. एडवर्टीजमेंट लीड जनरेट नहीं कर रहा है, तो वी नीड टू चेक कि क्या करने से थोड़ा चेंज कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, कौन सा मेथड काम करेगा, अरे हम लीड्स तो आ रहे हैं बट कन्वर्जन कितने हो रहे हैं। सो इफ वी आर फोकसिंग Mhm. ऑन द ट्रैकिंग ऑफ द लीड्स एंड वी आर ऑल्सो इम्प्रोवाइजिंग ऑन द प्रोसेस, लाइक अच्छा अभी और करने से क्या होगा, अभी करने से क्या होगा, Mhm. that is the third pillar which is going to make your sales go to the next level, and I will tell you many people do not do it, by the way. Right, right, right. I mean, I can relate to this. Taking another example, let's suppose, uh, okay, before going to that, ये है ना मेरे दिमाग में बहुत तगड़ा एग्जाम्पल आया है. But before I spill the beans, I just wanted to understand for you. जब भी हम सेल्स के ट्रैकिंग के बारे में बात करते हैं ना, दिमाग में आता है कि भाई एनालिटिक्स, ये एनालिस करना है, कन्वर्जन रेट एनालिस करना है, कितने आते हैं, क्या आते हैं, वो सब एनालिस करना है. Is there any tool that you use or you recommend people to use to keep a track of it? Is there anything that you say? Okay, okay. So, Omkar, if you ask me about tools, I'll tell you I'm little non-techy guy. होता है ना कई बार लाइक मैं Okay. आईटी बैकग्राउंड से हूँ नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता, और ना मुझे लिटरली ये टूल्स वर्ड से ना डर लगता है, बिकॉज आई हैव Uh-huh. बीन टू मेनी ऑफ द प्लेसेस, बिजनेस ओनर सेज सर इतने सारे वो एआई आ गए, ये आ गए, हमें तो नहीं पता। सो दिस क्रिएट्स अ फोमो. So to all the Uh-huh. people, if you are like me, you are a non-techie guy, right? Now जितना चाहिए हमने उतना तो समझ ही चुका है कि क्या क्या है, कैसे टूल्स यूज करते हैं, बट if you are one like me, who is non-technical, who doesn't have being so techy, then I'll tell you, I'm just going to Mhm. give you a very simple, like way of doing it. I call it as a very Uh-huh. simplified tool. And Omkar, Okay. if you are connecting with anyone, you can just let them know this, that high Uh-huh. functionality चाहिए. So I'm sure you must be knowing what is an Excel sheet. When we talk about Yes, of course. I Microsoft, mean, बहुत लोग use it's a करते very common thing, right? एक्सेल शीट आप हैं. ले लीजिए कंप्यूटर में, Mhm. आप उसको ओपन कीजिए, ये मोबाइल पे भी खुल जाता है। जस्ट हैव 3 कॉलम्स, एक कॉलम में Mhm. आप लिखिए नाम और उसके बाजू में फोन नंबर, तो उस Okay. जिससे आप बात कर रहे हैं उसका फोन नंबर आपने ट्रैक किया उधर, उसके बाजू में आपने लिखा कि व्हाट इज द स्टेटस, मतलब वो इंटरेस्टेड है, Okay. नॉट इंटरेस्टेड है,
इजी लाइक अरे वो बोल रहा है कि जब सपोज कोई पेरेंटिंग कोच कर रहा है, कोचिंग में फोन लगा रहा है, और वो बोलते हैं मेरे तो बच्चे ही नहीं है, तो उधर सर Mm-hmm. पटक के फायदा नहीं। सो जस्ट राइट डाउन ही डजंट हैव किड्स एंड दैट्स अ रेड वन, उसमें बात ही नहीं करना, राइट। अगर किसी ने इंटरेस्ट दिखाया तो राइट डाउन इंटरेस्टेड। क्योंकि बोलता है कि ना मेरे को अभी ना, मैं अभी बाहर हूँ, आप मुझे 5 दिन के बाद फोन कीजिए, तो लाइक दीजिए कि कॉल आफ्टर 5 days एंड डेट डाल दीजिए उधर। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टेटस ऑफ द कॉल। एंड उसके बाद में Okay. आप डाल दीजिए स्टेटस, व्हाट इज द फॉलो अप Mm-hmm. डेट, व्हेन आर यू गोइंग टू कॉल, एंड ऑल्सो उधर मेंशन कर दीजिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन। लाइक Yeah. अच्छा, जब बात करके ना हमें एक वाइब्रेंसी, एक हमें एक वो फील होता है कि हाँ ना ये इंटरेस्टेड बंदा है ना। कई बार देयर इज इंट्यूशन कमिंग अप, मुझे लग रहा है ना ये इसके बाद से ही शोड इंटरेस्ट, आई थिंक दिस इज 50% probabilities that it convert. So this is little like probables, just write down the conversion rate कितना हो सकता है ये वाला। so आपको एक समझ में आ जाएगा कि मोटा मोटा 100 में से 15 लोग या 20 लोग ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं। अब वो 20 में से आप जो फॉलो अप करेंगे, इफ आई टेक मिनिमम 10%, अगर 100 में से अगर मैं मिनिमम 10% लेता हूँ ना, यानी 10 लोग में एक, 10 को कॉल करोगे एक तो क्लोज होगा ना एटलीस्ट। तो 100 में से अगर Mm-hmm. 10 लोग आपके पास वो Mm-hmm. ट्रैकिंग होगी, ये 10 लोग क्लोज होता है, यू सेट Mm-hmm. अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग दिस Okay. पीपल। सो यू कैन यूज एक्सेल। और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, आप मेरे पापा Uh-huh. वाला मेथड यूज कर सकते हो। 2016 में जब मैं पापा का बिजनेस ज्वाइन किया, ओंकार यू वुड बी एस्टोनिश्ड, आई एक्चुअली लर्न दिस फ्रॉम हिम। मैं उनको जब बोलता ना इतने सारे आप कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं, पापा बोले बेटा ये सिस्टम उस्टम तो मुझे नहीं आता, लाइक माय डैड इज अराउंड 60 ईयर, सो उनके समय पे मोबाइल फोन भी नहीं था, तो सिस्टम तो बहुत दूर की बात है। Right. Right. तो Right. मैंने कुछ कैसे करते हो, तो ही शोन मी, आई डोंट हैव अ कॉपी हैंडी ओवर हियर। सो उन्होंने कॉपी Uh-huh. दिखाया मुझे, एक हल्का छोटा सा कॉपी, एंड ही हैज गॉट 3 columns इन इट, एंड ही यूज्ड टू राइट Okay. क्लाइंट नेम एंड फोन नंबर, उसी Uh-huh. के नीचे इधर बाजू में व्हाट इज द स्टेटस, जो उनसे बात हुआ, लाइक ही हैज विजिटेड द गाय, उसका एड्रेस लिखा रहता था वहां पे, वो विजिट करके आए उनको, तो क्या बात हुआ उनसे, उनका क्या रिस्पॉन्स था, एंड लास्ट में फॉलो अप डेट कि नेक्स्ट उनको कब जाना है, मंगलवार को जाना है, बुधवार को जाना है, गुरुवार को जाना है, व्हेन इज द नेक्स्ट डेट दे गोइंग टू टच हिम, एंड Okay. ही मेड so much of business just using this copy. Isn't this इतना आसान है, amazing? इतना आसान, मतलब आई मीन आई अंडरस्टैंड कि एनालिटिक्स और ये मतलब इतना आसान, सो आई मीन आई डोंट नो दिस विल बी अ बिग बूस्ट फॉर द पीपल जो है ना बहुत डर लगता है एनालिटिक्स का टूल्स यूज करने में। Business is very simple. और यस आई Business is मीन very simple. Like, मतलब इसको कॉम्प्लिकेट लोगों ने बना दिया है। बट इफ यू सी सेल्स बिजनेस, थोड़ा सा अगर आप हम लोग एक प्रोसेस के साथ चले ना, आई टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, फ्रॉम द पीपल आई हैव वर्कड विथ, द coaches, the trainers, the business owners, the entrepreneurs I have coached them, they are skyrocketing, they are making they're getting results by just implementing this kind of simple techniques. So I think today's audience is going to get a lot of benefit out of this, and that makes us actually get more peace and more satisfaction. Wow, I mean, the three pillars that we just spoke about. First is getting clarity of your client, आपके client के बारे में सब कुछ जानो। सेकेंड इज आपको उनको नर्चर नर्चर करना है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड हो, जैसे आपका बच्चा हो। नर्चर करते रहो, फॉलो अप करते रहो, बिल्ड अ रिलेशन, बिल्ड अ ट्रस्ट। और एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म सेट करो। इट नीड नॉट बी हाई फंडू थिंग, इट कैन बी जस्ट अ स्मॉल पेन एंड पेपर और एक्सेल शीट, जस्ट राइट डाउन name, number, what happened on the call, what is it, how you're tracking and everything. So if I have to take an example again, like, so these are the three pillars जो कि एक ordinary business बन होता है, एक ordinary इंसान होता है, वो एक ये इंजन, ये पिलर्स के साथ वो एक इंजन बनाता है, एंड he becomes a business tycoon or a sales tycoon. Now, if I have to again simplify this for the people with an example, let's suppose a doctor हो, एक general physician, right, and a surgeon. Let's implement these three pillars on them. पहला पिलर क्या बोलता है कि आपके क्लाइंट के बारे में जानो। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी एक सर्जन जो एक स्पेशलिस्ट सर्जन होता है, वो जानता है कि भाई इफ आई एम अ हार्ट स्पेशलिस्ट, आई नो व्हाट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग, I know who are the people who coming to me, and I know what is the outcome I want to give to the people. So वो एक exclusivity बनती है, and that is how he earns a lot. So Amit,
help me if whenever I'm going wrong, or if you want to correct me with this example, you can always interrupt me, right? I think So, this was absolutely appropriate. हार्ट सर्जन को पता है कि मेरे हाँ, क्लाइंट जेनरिक नहीं है. That's why these right. segregations have been made. So I think this was a very apt, example you gave. So bang Yeah. on. So that is one. एज अगेंस्ट द जनरल फिजिशियन, उसको कुछ पता नहीं है, सब लोग उसके पास आते हैं बट वो नहीं कमा पाते. नाउ दिस इज नॉट टू डिसरेस्पेक्ट एनी जनरल फिजिशियन, जस्ट अ डिस्क्लेमर. वी रिस्पेक्ट एवरी ईच एंड एवरी प्रोफेशन. नेक्स्ट पिलर दैट वी स्पोक अबाउट इज नर्चरिंग द लीड्स, और यू नो taking that consistent follow-ups and everything. So if you see, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, जो फिजिशियन, जो जो जनरल, सॉरी, जो स्पेशलाइज सर्जन होता है, वो आपसे कांटेक्ट बनाए रखता है. ही फॉलोज अप विथ यू, So ही बेस दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ यू, जो कि जनरल फिजिशियन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता है, राइट? आप एक बार उसके क्लिनिक में जाओ, बाहर आ जाओ, इट्स ऑल ओवर, राइट? Third pillar is tracking those sales, tracking those leads, tracking, एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म सेट करना. सिमिलरली एक सर्जन होता है, वो ट्रैक करता रहता है आपके पैरामीटर्स क्या है, वो क्या है, ये क्या है. एंड ड्यू टू दैट, ये सब पैरामीटर्स पिलर्स को फॉलो करने के बाद, उसके बाद वेयर ही स्टार्ट्स टू अर्न, दैट ही बिकम्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस पर्सन, सर्जन, राइट? एज अगेंस्ट द जनरल फिजिशियन, वो ट्रैक करता है बट ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल. तो अमित, before we end up this particular topic, okay, before that, दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि भाई, ये कन्वर्जन क्या, कैसे होता है, कहाँ से शुरू होता है, और या फिर हम फॉलो अप कैसे करें. स्टे ट्यून, वी आर कमिंग अप विद दोस minute, detailed, oriented topics soon, and you will be having a blast. So, Amit, before we end this topic, what are your final words? So if you ask me now, Omkar, you have already given the nuggets. You have already told that if you got any questions, you got any techniques, we'll be coming in upcoming sessions. But the last, if you ask me, you know, I have been in a situation past years, the version now I'm upgraded with my mentors and learning from so many coaches, trainers, and working on myself. I have understood this that there is a talent which is by nature. Like you would have seen some people, they are like talented by birth. But sales is not a talent. Sales is a Mm-hmm. skill. And a skill Mm. can be built with practice. So to all my lovely audience who have been listening so far consistently, right? This is a reward and this is a confidence. Me and Omkar, like we would want to tell you that through this sales abundance code we would want to throw this light on you is skill hai, thoda effort, practice है ना, you can become a best seller. You can have your own engine, own system, and once this engine and system is developed, what goes next? It's just consistent output. So keep Awesome. setting it up, keep practicing, keep getting the skills of sales done, and यार खूब पैसे कमाओ. कौन रोक रहा है? क्या बात है. मतलब बहुत एक्शन लो, रुकना नहीं है, दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना है, बस एक्शन लेते रहो. टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स, इट्स ऑल ओके, बट कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लो. जस्ट ब्रेक द सीलिंग एंड यू विल सी वन डे you have become what you wanted to become always. So एक शायरी, एक शायरी यहाँ पे एक परफेक्ट याद रही है मेरे को, Oh, Ishad. जहाँ इराद, थैंक यू सो मच. जहाँ इशारों में दम होना, वहां रास्ते भी मिलते हैं उस गम से. Oh, nice. लेट मी रिपीट. आई एम नॉट अ शायरी एक्सपर्ट शायरी, सो जस्ट बेयर विथ मी. जहाँ इरादों में दम हो, वहां रास्ते भी मिलते हैं हर गम. क्या बात, तो क्या awesome. So with that, final thing for the audience, if you want to understand more in depth about this sales thing, about your business growth, about your life growth, what you need to do is you just need to join our WhatsApp group where we'll be sharing. We are in fact coming up with tons and tons of amazing stuff out there. It's not just a podcast.
but we are coming up with tons and tons of amazing uh, things for you guys so that you grow in each and every aspect of your life and business. So to make sure you are in the group at the right time, just click on the link below, fill up the form, and you will be directed to a WhatsApp community of abundance. So action and abundance, keep that in mind. Action and abundance. So Amit, what a lovely start for this podcast. What a lovely start of the मैं खुश हो गया भाई. I really love this podcast. What are your final thoughts about this first episode that you're speaking? I remember the quote which says morning shows the day. So if this was the start, if this is the the way we started the podcast, adding on sales and giving them clarity, man, this is going next level. And I'm sure all the people who are joining the WhatsApp group, the way they are being consistent, they are in being in the universe of learning, transforming. Man, I can just vouch for this. The next level of sales is going to be skyrocketing. So I'm super, super, Awesome. super excited. Awesome. So thank you so much, Amit, for your time and for amazing audience for you as well. Thank you so much. So अगर आपको लगता है कि इस फर्स्ट एपिसोड में वैल्यू आपको मिला हुआ है, do share with the other people. Do share with those who you want them to grow in their life. So again, let's connect on a weekly basis. So this podcast will be a weekly podcast जहाँ पे हम लोग है ना हर हफ्ते एक टॉपिक के साथ आते हैं. So let's connect next week with another amazing topic. I am super excited to have you back next week on amazing Yes. topic. So bye bye. Have a great week ahead. See you. Tata. Thank you so much. Bye bye.